organisms. क्यों देखते हो अच्छा यहाँ पे So I'll not get into too much of a details because the first chapter is taught, plant kingdom is, I think, is also being taught. Another one, the biological classification is also taught. So I'll not get into, how do you classify all the organisms that were then known. So I'll not get into that, but we'll talk about certain facets of classification of animals. Okay. So the primary, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? Because जब हम एक एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे वहां पर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन. सो वो सात आठ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके जो नेचर है वो हम बेसिक पढ़ लेते हैं एंड देन व्हेन वी विल गेट इनटू द फाइलम्स विल जस्ट टिक ऑन इट ईच ऑफ दिस. Yeah, one of them is coelom, presence and the absence of coelom. Okay, we'll get into that. So the first thing that you're going to learn over here is the level of organization. Obviously, I've learned this in the first chapter. What do you mean by level of organization? Life, it starts from a single cell, right? And a single cell is the first level of an organization. Okay. So the first level of an organization is a cell, cellular level of an organization. Now, what you need to know over here is when we are talking about a cell, the cellular level of an organization can again be classified into two categories. One is cellular level of an organization, unicellular organism, and cellular level of an organization, multicellular organism. Now, what is the difference between these two? तो यहाँ पर मैंने बोला है कि it's a cellular level of an organization. The cellular level of an organization को ही हम क्लासिफाई कर रहे हैं into a singular cell, उसको ही हम क्लासिफाई कर रहे हैं into a multicellular organism. How is it even possible? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल वो सारा मल्टी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है और मल्टीसेल्यूलर नहीं, तुम मुझे डिफरेंस बता रहे हो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस बता रहे हो. ये मेरा क्वेश्चन नहीं है. My question is not, I'm not asking you what is the difference between a unicellular and a multicellular organism. My question is, see, it's like, what is this? 11, class 11. So all the students who have passed out class 10 are sitting over here. And who are not promoted to class 12. But then again, you have a 12 pass batch. Now 12 pass का जो batch है, you don't have a limit to it. Immediate 12 pass student can be present over there. In fact, when I was teaching earlier, there were students who were in their last year of BSc. वो खुद ही पढ़ा देंगे बाकी सब. ऐसे भी students. Actually, there are such students. So there is a heterogeneity that's present over there. Here it's not, and over here in your class it's not like that. So my question over here is, जब मैं बोल रहा हूँ कि all of these they belong to the first level of an organization, that is a cellular level of an organization. How do I then classify organisms into unicellular and multicellular? What is the difference from that perspective? What's your name? शयान ने जो बोला है कि यूनिसेल्युलर वो एक ही सेल है जो सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और मल्टीसेल्युलर में द वर्क इज बीइंग डिवाइडेड. देयर इज समथिंग कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर. ये टर्म आ जाता है डिविजन ऑफ लेबर. ये मेरा क्वेश्चन एक्चुअली नहीं था. तो फिर दोनों को ही मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा ही है, ऑलरेडी शयान ने हम लोगों को बता दिया है कि डिफरेंस क्या है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. ओके, अंडरस्टूड. लेकिन फिर भी हम दोनों को एक ही एक ही ब्रॉड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्यों क्लासिफाई करते हैं?
That even any organism is made up of cells. Who is not? You getting the point? मैं दोनों मतलब यूनिसेल्युलर को भी और मल्टीसेल्युलर को भी दोनों को ही सेल्युलर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में क्यों क्लासिफाई कर रहा हूँ? वो बेसिक structural process like what or organic कौन? What is the next level of an organization? organ. नहीं tissue. What did you say? Organ. No, what did you say? Organ. Organ. Tissue के बाद organ. टिश्यू के बाद ऑर्गन नहीं आते. Next is tissue. So how do you define a tissue? Performing And सिर्फ फंक्शन परफॉर्म करने से नहीं होगा. You are performing the same function. You're studying over here. You're also performing the same function. You're also studying over here. Are you the same person? No. Are you clonal? No. same type of cells performing the same function. So structurally and functionally similar. ये दो terms यहाँ पर आ जाएंगे. Tissue मतलब cells that are structurally similar and functionally similar. So structurally and functionally similar cells, they form a tissue. Okay. Of course, it makes a lot of sense that a tissue definitely will be, जिसमें tissue form होता है, वो definitely will be a multicellular organism. तो फिर ये वाला multicellular organism और ये इस वाले multicellular organism में क्या difference? कुछ है? Plants मतलब सिर्फ animals के लिए food है या plants के लिए? हम क्या chapter पढ़ रहे हैं आज? Animals. हाँ, अच्छा. हाँ, ये प्लांट में भी एप्लीकेबल हो जाएगा. ये species ऐसा है जिससे दूसरी चीज से काम हो होता है लूज टिश्यू. हाँ, तो लूज टिश्यू मतलब टिश्यू. तो वो तो टिश्यू लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा. आ गया. तो कहना क्या चाहते हो? আরেকবার রিপিট করছি. কোয়েশ্চেনটা হলো, দেখো এখানে আমার ইউনিসেলুলার অর্গানিজম একটা সিঙ্গেল সেল, মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম মোর দেন ওয়ান সেল, দুটোকেই আমি সেলুলার লেভেল অফ এন অর্গানাইজেশনে কেন ফেলছি? এটা কি পসিবল? ঠিক লিখেছি না ভুল লিখেছি এইটুকু? রং, রাইট. মানে মতলব রাইট, ইউ আর রং. No, you're right that I am wrong. Okay. Anyone else? No, I'm not wrong. You are wrong, but I'm right. That's my question. Think. All of you are roaming about the thing, but you're not, especially you, but you're not giving me the right answer. In fact, even you. সেটা বোঝানোর জন্যই আমি এইটা লিখলাম, টিস্যু. হ্যাঁ, বলো. এক সেকেন্ড. মাল্টিসেলুলার মানে কি? অনেকগুলো সেল. আর ইউনিসেলুলার মানে কি? একটা সেল. কি করে সেম হলো? আচ্ছা, কি বলতে চাইছো তাও শুনবো, বলো. না, বলো না. বলতে বলতেই আনসারটা বেরোবে, বলো. হ্যাঁ, না তাহলে তুমি যেটা বলছো বুঝিয়ে দিই. অ্যাকর্ডিং টু হোয়াট ইউ আর সেইং, সেইভাবে দেখতে গেলে তাহলে তো টিস্যু লেভেল অফ অর্গানাইজেশনটাও সেলুলার লেভেল অফ অ্যান অর্গানাইজেশন. অর্গানটাকেও তাহলে সেলই বলবে. তারপর ঠিক জায়গায় তুমিও ঘুরে ফিরে আসল জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারলে না, বলো এবার. এই দুজনের মধ্যে কি ডিফারেন্স? দুজনেই সেলুলার লেভেল অফ অ্যান অর্গানাইজেশন বলে. না, কেন ডিভাইড করছি না, বরং এরা দুজনকেই আমি একই ফ্রেমের মধ্যে ফেলছি কেন?
हैं? এই টিস্যু কি করে ইউনিসেলুলার হয় গো? ধাঁধা আমি বলবো, it's a very basic, it's a very generic thing. বলো বলো বলো, যা মাথায় এসছে বলো। কেউ খুব একটা ঠিক বলছে না, তো তুমি বলতে পারো। তো ঠিক বলছো, না হলে কি হবে? স্ট্রাকচারালি বা ফাংশনালি সিমিলার নয় ও বলছে, সো তাতে কি হবে? That's it. That is the answer. So basically टिश्यू अगर फॉर्म करना है तो फिर उसको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होना पड़ेगा। लेकिन बाई चांस अगर वो किसी भी एक मोस्टली फंक्शनल तो वो सेम सिमिलर परफॉर्म करता भी है, लेकिन स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होता है। Hmm? Will the entire chapter is about examples. Okay, we'll talk about examples. Okay, so basically यहाँ पर क्या हो रहा है? Okay, let's take a very generic example. Let's see. Suppose you have one cell. Okay, एक्चुअली तुम्हारे आंसर से ही इसका आंसर आ जाता है। जैसे तुमने बोला कि एक सेल, सपोज फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म टू लिव, इट हैज टू परफॉर्म ए बी सी डी ई 5 functions. So this one single cell, if it can perform all the functions A, B, C, D, and D, then that's a unicellular organism, cellular level of an organization. But then also you have other cells, sorry, you have other organisms which is actually made up of, say, these many type of these different types of cells. So it is actually made up of these different type of cells. Maybe this one is performing function number A. Maybe this one and this together are performing function number B. Maybe this one is performing function number C and D. Maybe this one is performing E. Are they structurally similar? No, they're not. Are they forming a tissue? No, they're not. So it lies in between. It's not a tissue. It is not a tissue. So basically इस organism के अंदर many बहुत सारे cells हैं, लेकिन वो टिश्यू फॉर्म नहीं करता है। तो इसको हम किस लेवल में रखें? टिश्यू ही फॉर्म नहीं करता है तो ऑर्गन कहां से फॉर्म करेगा? ऑब्वियसली सेल्यूलर लेवल। फंक्शन के साथ ऑर्गन का क्या है? एक सेल, जैसे कि कार्डियक मसल का कार्डियक एक स्पिंडल फाइबर देता है, स्पिंडल मसल से। तो फिर हम लोग पर सेल टाइप टू सेल स्ट्रक्चरली तो सेम नहीं है, बट वो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पता चलेगा। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तुम बात कर रहे हो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये जो ये है, दिस इज वन ऑर्गेनिज्म, दैट आल्सो इज वन ऑर्गेनिज्म, a single organism performing a single organism which is a single cell, and it is performing all these functions. Okay, and this one is also a single organism having 5 different types of cells in which you have division of labor, but they do not form a tissue. Did we get this funda right? তাহলে cellular level of an organization, unicellular, cellular level of an organization, unicellular organisms, cellular level of an organization, multicellular organism which do not form a tissue. And by chance if it can form a tissue, अगर वो tissue form कर पाता है, then that gives you a tissue level of an organization. Okay, now the misconception. So in this multicellular organism is a group aggregate of. हाँ बोलो। In this the example that you have given, in this multicellular organism is like an aggregate of
It's an aggregate of cell which does not form a tissue. The very first, phylum that we are going to study. 47. You wanted an example? Yeah. Okay. So we have cell. From there we form tissue. नहीं, टिश्यू के बाद ऑर्गन नहीं आता है. यस, टिश्यू सिस्टम आता है. Now, listen. Similar type of cells, they combine to form a tissue. Similar type of tissues, they combine to form a tissue system. But here lies the difference. Different type of tissue systems which can come together, which can coexist together, and which can co-function together as a singular entity. That forms an organ. Of course, you've learned all of this in the previous chapter. I'm not spending much of a time over here. And then again, different type of organs. Now, यहाँ तक है similar. इसके बाद से different. I mean, similar type of cell forms a tissue, similar type of tissue forms a tissue system, different type of tissue systems which can coexist and co-function. No, they don't perform the same function. Coexist and co-function. Co-function does not mean same function. I'll give you. हाँ, मतलब ये जो पूरा तुम्हारा जो राजीव क्लास है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्लास हो रहा है, वहां पर सत्या कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, वहां पर जो जिसने यहाँ पर चाय दिया है वो कुछ काम कर रहे हैं ना. एवरीवन, हर किसी का कुछ ना कुछ काम है, लेकिन टुगेदर जब हम बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट की, वी डोंट टॉक. अच्छा, सत्या की बात हम अलग से नहीं करते, राजीव की बात हम अलग से नहीं करते. वी टेक इट एज अ यू नो टुगेदर. हम कहते हैं राजीव क्लासेस. गेटिंग द थिंग, ये बात. So, they can co-function. Co-function does not mean the same function. সত্য এখানে যে কাজটা করছে আমি সেই কাজটা করি না, যিনি চা দিচ্ছেন আমি সেই কাজটা করি না, তোমরাও সেই কাজটা করো. সবার আলাদা আলাদা ফাংশন আছে, কিন্তু একসঙ্গে আমরা একটা কাজ করি. ঠিক আছে? So, organ. Different types of organs, again, which can coexist and co-function, they form the organ system. Now, after this, no, multicellular. Okay, now this again. Organism doesn't lie up above the hierarchy. No, organism इसके बाद नहीं आता है. गलत. Organism runs parallel. An organism doesn't lie above all of these. No. Why? Because you people know this. ये जो एक सेल है वो भी एक ऑर्गेनिज्म ही है. ये जो टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये भी एक ऑर्गेनिज्म ही है. A tissue system level of an organization can also be an organism. Organ system level of an organization can also be an organism. And of course, organ system level of an organization can also be an organism. ऐसा नहीं है कि जो organ system नहीं बना पाता है वो organism नहीं बना पाता है. ऐसा नहीं है. और organism को organism इसीलिए कहते हैं because उसमें ये organization रहता है. Organized. Because everything is so very organized. इसीलिए उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं. वो टर्म ही आया है वहां से. ये जो टर्म ऑर्गेनिज्म है comes from organized. Everything is so very organized in a hierarchy. You getting this? তোমার নাম কি? না, আমি কি এত টাকা হয়ে গেছি? আমির, হামিদ. হামিদ, তুমি আলীর ভাই? মানে ওই আমাদের তোমার দিদির নাম কি? হ্যাঁ, নাগমার. তো এটা বুঝতে পারলে? ক্লিয়ার হলো? নেভার প্লেস অ্যান অর্গানিজম অ্যাবভ, নেভার প্লেস অ্যান অর্গানিজম অ্যাবভ দিস. নো. কোনোদিন যদি এটা হয় তার মানে কিন্তু একটা সেল একটা অর্গানিজম নয়, সেটা বলার চেষ্টা করছো. তাই কি? তা নয় কিন্তু. ইউনিসেলুলার অর্গানিজম ইজ ভেরি মাচ অ্যান অর্গানিজম.
A tissue level of an organization is very much an organism. And of course, an organism who has this or all these different type of organ system, যেমন আমরা, we are an organism. Clear হয়ে গেল? So this is the first level. যখন আমরা প্রত্যেকটা ফাইলাম পড়বো, প্রথম যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা